Good morning, students. Today we are going to discuss method of substitution. In the previous two videos, in the first video of integration, we defined what is integration. Integration as the reverse process of differentiation, and then we had written few formulas of integration based on the derivative fact. Then we did exercise 7.1. So today we are going to discuss the method of substitution. In this method, the given integral the given integral which is in terms of x, integral of f of x with respect to x, can be transformed into another integral, another form, by changing the independent variable x, by changing the independent variable x to t, or you can change it to z, whatever you like, by changing the independent variable x to t by putting x as some function of t. So we'll differentiate dx by differentiating with respect to t. In exam, there is no need to write this. Differentiating with respect to t will get dx by dt with respect to t, x ka derivative dx by dt, and g dash t. So this will imply dx as equal to g dash t dt. So now my given integral f of x dx will become given integral f of x dx is equal to f of g of t, and dx can be replaced by g dash t dt, g dash t dt. Now, how to decide that we have to put x as sine of t or cos of t or some other function of t? We'll try to categorize into few forms. So form number one, not all the integration based on substitution can be characterized into different forms, but basic are these 3-4 forms. First is f of x raised to power n. If we have integration of this type, function raised to power some net number, it can be fraction also, fx ki power n f dash x dx. Then we'll put f of x as t. We'll put f of x as t, differentiating both sides. We get f dash x is dt by dx, differentiating with respect to x. So this will imply f dash x dx is dt. So we'll get this equal to this given integral f of x raised to power n f dash x dx is t raised to power n. Fx is t raised to power n, and f dash x dx is dt. So I will write dt. F dash x dx is dt. You can see f dash x dx is dt. So we have written this as t. So substitution आपको ऐसे करना है कि entire जो इंटीग्रल है इट शुड चेंज टू सम अदर वेरिएबल. ऐसा ना हो कि x भी रह जाए और t भी आ जाए. Now we can apply the formula of x raised to power n. So t raised to power n plus 1 upon n plus 1 plus c. So we'll get f of x raised to power n plus 1
upon n plus 1 plus c. In MCQ type question, whenever you see a function raised to some power into exact derivative of that function, then you can use fx raised to power n plus 1 upon n plus 1 plus c as a direct formula. Let us do one or two questions based on this. Evaluate sine cube x cos x dx. Put now sine x डेरिवेटिव इज cos x, तो sin x का होल क्यूब, यहाँ पे एफ एक्स इज साइन एक्स एस टी, तो डिफरेंशिएटिंग with respect to x, we get cos x is dt by dx, or cos x dx will become dt. Dx you can straight away write here. So therefore, given integral sine cube x cos of x dx is, now sine x is t, so sine cube will become t cube, sine cube will become t cube, and cos x dx, you can see cos x dx is dt. So t cube dt, so we'll have t raised to power 4 by 4 plus c. Now what is t? Sine. So sine raised to power 4x by 4 plus c. Now if it is objective, I'm repeating, if it is objective, you will argue that this is t cube dt. So you will straight away write this answer. Tan square x into sec square x dx. So here derivative of tan x is sec square x. So we will put, अब मुझे डायरेक्ट लिखना हो तो tan x t sec square x dx dt, तो t square dt, तो पहले हम करके देख लेते हैं. Then put tan x as t, differentiating with respect to x, we get tan x is sec square x is equal to dt upon dx. So you can write dx straight away here. So this implies given integral tan square of x sec square x dx is, tan square is, tan x is t, so tan square will become t square, and sec square dx is dt, so you write this as dt. तो t क्यूब by 3 हो जाएगा, t square by 2, t square t की पावर 2 plus 1 upon 2 plus 1, t cube by 3, and t is 10 x, so 10 cube x by 3 plus c. Now let us take one more form of this very form. If the power is minus 1, so it will become 1 by fx upon f dash x. It was fx raised to power n. If n is minus 1 and f dash x, or we can write this as f dash x by fx. So the popular form is denominator का derivative numerator में हो. If numerator is exact derivative of denominator, then you have to put again f of x as t, and proceeding in the same fashion, f dash x is equal to dt upon dx, which you can write here. So integral becomes f dash x upon fx dx will become f dash x dx is dt, f dash x dx is dt upon t, or you can write 1 by t. So log of mod of t plus c, log mod fx plus c. So whenever denominator is exact derivative of numerator, answer is log of denominator. This also you can use as a formula in MCQ. For example,
evaluate this very integral tan x dx. We have taken this as a formula. वो मैंने कहा था, will prove it with the method of substitution. You can write it as sine of x upon cos of x. And remember, sine is not the derivative of cos, exact नहीं है. तो minus sine is the derivative of cos. So I will write minus of minus sine x. Now I will put cos x as t. Put cos x as t. So you will get minus sine x is equal to dt by dx, which you can write here. So therefore given integral will become minus outside and minus sine x dx. This whole is dt. So you can write this as dt, and upon cos x, so cos x is t. So dt by t, or you can write 1 by t dt. So minus log mod of t plus c. So minus log mod cos x, t is cos x, or you can apply the property of log. This will be cos x whole की power minus 1. So, or you can see it will be t की power minus 1. So 1 by t. So 1 by cos is sec x, log sec x. Because if you remove this minus, it will appear here. So 1 by cos हो जाएगा. So that will be sec of x. So tan x का integration here. Similarly, you can do for cot of x. Then one more form, f of g of some x. It is composite function, and derivative of this inner function is there. Integration of function of some other function whose derivative is with dx. So we'll put this g of x as t. Then g dash x, differentiating with respect to x, g dash x is equal to dt by dx. So given integral will transform to f of gx dx is equal to f of x gx. Given integral will transform to f of gx g dash x dx equal to f of t g dash x dx is dt. And if it will be in the standard format, कोई भी अगर standard formula है ये, तो ये हो जाएगा आगे. So let us take question based on this. Evaluate, for example, sine of x square into x. Now x square का derivative 2x होता है, तो we can make it as 2x by doing 1 by 2 into 2x sine x square. And we can rearrange the terms. 1 by 2 sine of, you can write this in bracket x square into 2x dx. We have regrouped them. So if I put x square as t, तो कई बार dx के साथ इसका exact derivative जो होगा multiple होगा. So put x square as t, differentiating will get 2x is equal to dt by dx, which will come here. Therefore given integral x sine of x square dx is equal to, we left here, तो यहाँ पे half आ जाएगा. Sine of x square means t here, and 2x dx you can see is dt. तो remember sine का cos नहीं लिख देना, ये common mistake है, minus cos होता है. Half of, because sine is derivative of which function, not of cos. Cos का derivative minus sine होता है, माइनस कॉस का डेरिवेटिव प्लस साइन होगा, तो माइनस हाफ कॉस टी प्लस सी. तो -1/2 cos of t is
x square plus c. Now, sometimes you won't see that if you put something as t, some other function will become dt. Sec x, you multiply this with sec x plus tan x. You get sec x plus tan x. और ये मल्टीप्लाई क्यों किया, आप इसके जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसके फॉर्मूला से हिंट ले सकते हो कि डिनोमिनेटर में sec x प्लस tan x होगा, तो इसको t पुट करेंगे, ऊपर dt बनेगा, तो log sec x प्लस tan x आएगा। अब न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करो, sec स्क्वायर x, sec x tan x, sec x plus tan x dx. Now put this as t, this will become dt. So put sec x plus tan x equal to t. This will mean sec x का डेरिवेटिव sec x tan x and tan x का sec square x, and keep the bracket dx is equal to dt. dt by dx होगा, dx इधर आ गया. Therefore secant x dx का इंटीग्रेशन हो गया, this will become dt, or you can say this will become dt. You can see sec square x plus sec x tan x dx is dt and denominator is t. So 1 by t dt, dt by t भी लिख सकते हैं, और 1 by t dt, log mod t plus c, और t को रिप्लेस कर दो log mod sec x plus tan x plus c. Sometime the question won't be directly in that form that you put something as t, other will be dt. Like in the previous question, you can see this question also, sin cube x cos square x dx. अब sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, cos स्क्वायर नहीं होता. तो cos का डेरिवेटिव sin x होता है, sin क्यूब नहीं होता. तो इसको थोड़ा सा हम ब्रेक करेंगे, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x sin x, क्योंकि साइन स्क्वायर को नाउ आई कैन राइट इन टर्म्स ऑफ कॉस स्क्वायर, और कॉस को टी पुट करेंगे तो वो साइन की टर्म में आ जाएगा. तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स dx. Now you can put cos x as t. तो इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स. तो डी एक्स को आप डायरेक्ट इधर लिख सकते थे. तो आई हैव विद मी साइन एक्स डी एक्स, तो मैं साइन एक्स डी एक्स निकाल लूँगा. साइन एक्स डी एक्स विल बिकम, डी एक्स इधर आ गया, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज डी टी. तो साइन एक्स डी एक्स विल बिकम minus dt. Therefore, you can write this as I equal to, or you can write the whole sin cube x cos square x dx. इसको हमने यहाँ छोड़ा था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, cos x is t, तो 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर इज टी स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स इज माइनस डी टी. तो माइनस को यू कैन पुल आउटसाइड, और टी स्क्वायर माइनस टी फोर, तो टी फोर माइनस टी स्क्वायर लिख देता हूँ, ये आएगा ना टी स्क्वायर, और बाहर माइनस है तो माइनस टी स्क्वायर इंटू दिस माइनस इज टी फोर. तो टी 5/5 माइनस टी क्यूब बाई 3 प्लस सी. तो टी 5 हो जाएगा कॉस की पावर 5
x by 5 minus cos cube x by 3 plus c. Now let us take another question. Integral of sine of x upon sine of x plus a dx. Either you can do it by substitution, or you can do it without. You can put x plus ast. Let us first do with the help of substitution. अब इसमें भी डायरेक्ट नजर नहीं आएगा कि वाई वी आर पुटिंग एक्स प्लस ए एस टी, क्योंकि साइन ऑफ एक्स प्लस ए को करेंगे तो कॉस ऑफ एक्स प्लस ए चाहिए, वो तो है नहीं। तो एक्स प्लस ए को टी डी एक्स का डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 1, और यू कैन से एक्स का 1 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स इज डी टी। अगर ये एक्स प्लस ए ऊपर होता, नीचे एक्स होता, तो हम साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा लेते। तो देयरफॉर गिवन इंटीग्रल इज साइन ऑफ एक्स प्लस ए dx is sin x is t minus a अपॉन sin t। अगर नीचे ये सिंगल होता ना, x होता, ऊपर x प्लस ए या माइनस ए होता, तब हम फॉर्मूला लगा लेते साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का। साइन टी कॉस ए, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी, तो साइन टी कॉस ए कॉस टी साइन ए बाय साइन टी। नाउ यू कैन डिवाइड इंडिविजुअली बाय साइन टी, तो साइन टी कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए बाहर आ जाएगा, कॉस ए डी टी। देन cos by sin is cot t, cos a sin a is outside, cos t by sin t will become cot t. Now the formulas are known to us. Cos a dt का t होगा, but we write algebraic function before trigonometry. Cos a t लिखेंगे तो थोड़ा ऐसा लगेगा कि cos of a t है, तो there is rule for writing which function has to be written first. तो t cos a माइनस साइन ए कॉट टी का, ये t है, कॉट टी का हो जाएगा लॉग मॉड साइन टी, दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला, प्लस सी, एंड t वाज x प्लस ए, तो x प्लस ए कॉस ए माइनस साइन ए लॉग मॉड साइन x प्लस ए प्लस सी। अगर आप इसको खोल दोगे ना, x कॉस ए कॉस ए प्लस सी अनदर कांस्टेंट हो जाएगा, तो आंसर x कॉस ए माइनस साइन ऑफ दिस प्लस सी भी हो सकता है। dx अपॉन, now this type of question 1 minus cot x, so you can write 1 minus cos x by sin x। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, साइन को एलसीएम लेंगे, तो अल्टीमेटली विल गेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का ये तो डेरिवेटिव है नहीं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रिक लगानी पड़ेगी। मैं इसको स्टार मार्क क्वेश्चन बना देता हूँ। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिख दो एक बार तो, और एक बार साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक बार डिनोमिनेटर लिख दो, एक बार उसका डेरिवेटिव लिख दो। ये चार फंक्शन होंगे, 1 माइनस कॉट एक्स, 1 प्लस कॉट एक्स, 1 प्लस टेन एक्स, 1 माइनस टेन एक्स। तो इसको साइन कॉस में चेंज करके ऊपर एक बार न्यूमरेटर लिख देना है, एक बार उसका डेरिवेटिव लिख देना है, और बीच में प्लस या माइनस सोच के लगाना है कि हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ साइन है ना, तो अगर मैं माइनस लगाऊंगा साइन कट जाएगा, बचेगा ही नहीं, तो मुझे साइन को बचाना था, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। अब साइन एक्स 2 साइन एक्स हो गया, माइनस कॉस प्लस कॉस कट गया, तो ये 2 साइन बन रहा है, तो यहाँ पे मैं 1/2 कर दूं। अब इसको हम सेपरेट करेंगे और सीधा लिखेंगे 1/2
this by this into dx plus integral sin x plus cos x sin x minus cos x dx half dx का x, and since its exact derivative is this minus cos x का derivative sin x का cos x, so I can say numerator is exact derivative of denominator, तो आप इसको चाहें तो t पुट करके इसको dt बना दें और सीधा लिख सकते हैं log mod sin x plus cos x, क्योंकि एग्जाम में अब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो गए हैं, चाहे छोटे ही हों लेकिन स्टूडेंट्स को उसमें टाइम लगता है, इसलिए आपको कहीं कहीं टाइम भी बचाना होगा. अनदर क्वेश्चन, विल सी मैनी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. dx अपॉन 1 प्लस ex. अब इसमें क्या पुट करें अभी तो समझ में नहीं आ रहा, तो जितने भी 1 प्लस ex हो 2 प्लस ex हो इस टाइप के क्वेश्चन हो, इसमें आप ex कॉमन ले लीजिए. नीचे से कॉमन लेने का मतलब डिवाइड होता है 1 बाई ex और ex बाई x ex, तो e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, e की पावर माइनस एक्स 1 बाई ई एक्स इज e की पावर माइनस एक्स प्लस 1, और इसका डेरिवेटिव माइनस टाइम्स आएगा तो आप पहले ही माइनस लगा सकते हैं या पुट करके, पुट e की पावर माइनस एक्स प्लस 1 एस टी, तो डिफ्रेंशिएटिंग e की पावर माइनस एक्स डी एक्स और माइनस एक्स का माइनस 1 आएगा इज इक्वल टू डी टी. तो देयरफॉर दिस इंटीग्रल 1 प्लस ई एक्स डी एक्स आई कैन से माइनस ऑफ माइनस ई माइनस एक्स डी एक्स लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे माइनस ई एक्स डी एक्स चाहिए, तो अगर मेरे को इतना लिखना है तो मैं माइनस डी टी लिख दूंगा, और आई कैन मल्टीप्लाई हेयर विद माइनस, और माइनस मैंने बाहर लिख दिया अपॉन ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1, तो ये माइनस दिस होल इज टी डी टी, दिस होल इज डी टी, और नीचे मैंने पूरे को टी लिया, तो माइनस लॉग ऑफ मॉड टी. अब टी की सीधी वैल्यू भी डाल सकते हैं, एग्जाम में टाइम कम होगा, माइनस लॉग मॉड टी इज ई की पावर माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस सी. लेट अस टेक मोर क्वेश्चन. साइन 2x a साइन स्क्वायर x प्लस b कॉस स्क्वायर x. अब या तो आप cos स्क्वायर x को साइन स्क्वायर x की टर्म में लिख दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2 साइन x और साइन x का cos x, ये साइन 2x बन जाएगा. cos स्क्वायर का क्या होगा 2 cos x इंटू माइनस साइन x, तो ये भी साइन 2x की टर्म में आ जाएगा. तो ये हम जो है पूरे डिनोमिनेटर को वी कैन पुट एज टी, और यहाँ पे साइन x cos x भी होता है ना, इंस्टेड ऑफ साइन x साइन 2x साइन x cos x भी होगा, तो एक ही बात है, बिकॉज दैट कैन बी मेड साइन 2x. साइन x cos x है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 साइन x cos x बना सकते हैं, बाहर डिवाइड कर देंगे, तो विल पुट a साइन स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x as t. This implies a 2 sin x cos x प्लस b 2 cos x और cos x का माइनस साइन x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स लिख लो अभी. देन दिस इज साइन 2x, सो राइट साइन 2x, और मैं कॉमन भी ले लेता हूँ साइन 2x को, दिस विल बी a, and this 2 cos x sin x is sin 2x into minus b. I can write b, this as minus sin 2x, तो minus b sin 2x, और dx इधर आ जाएगा dt इधर आ जाएगा, तो sin 2x dx is 1 upon a minus b dt. therefore given integral, आप इसको i अज्यूम कर सकते हैं अगर आपको ये बार बार नहीं लिखना है तो, I is equal to sin 2x dx. Sin 2x dx is 1 upon a minus b, constant है, you can write outside.
into dt, or 1 upon this whole, so 1 by t. So 1 upon a minus b, 1 by t is log mod t, t की वैल्यू डाल दो, 1 upon a minus b log mod a cos square x, a sin square x plus b cos square x. नीचे खाली साइन स्क्वायर एक्स प्लस समथिंग होगा तब भी यही होगा, तब उसका डेरिवेटिव साइन 2x होगा. So in this type of problem, you have to think that what we put something as t, other becomes dt. So we'll do in the next video exercise 7.2. So children, if you like this video, you can share it with your friends, and if you have not subscribed to my channel, then please subscribe. डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें, एंड डोंट फॉरगेट to subscribe my channel and press the bell icon so that you get the information about my latest videos.